Hello everyone, welcome to Legal Darshan. In today's video, we are going to talk about Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act. Since we are now in the times when a lot of papers are getting leaked, the recent NEET controversy is around the corner. Even NTA exam got cancelled. So this act definitely is having some kind of relevance to be talked about. First is the purpose that there is a state, Rajasthan, of course, which has enacted the law way back in 1992, which speaks of prevention of unfair means in the public examinations. Okay, now this is the first reason that I'm advocating for making this video, that there are a lot of cases of exam leaks. Second, the Rajasthan APO exam is around the corner, and if you go through the syllabus and if you are preparing for that, the syllabus for APO exam in Rajasthan, which is tentatively scheduled to be on 19th January, it mentions this act to be a part of the syllabus. So there are two motives behind making this video, and I hope you will find it useful. So with this, we will begin the discussion on the Rajasthan Public Examination Prevention of Unfair Means Act 1992. Now, this act is numbered as 27th Act of 1992, received the assent of Governor on 8th November 1992. Now, the motive of this act is the preamble, or the long title reads that this is an act to prevent the leakage of question papers and use of unfair means at public examinations, and to provide for matters connected therewith and incidental thereto. So basically, the motivation behind this act was to prevent the leakage of exam papers, and which exam? Public exam papers only, and use of any unfair means at public examination. So basically, जितने भी राजस्थान के एग्जाम्स जो है वैकेंसीज लिस्ट होती हैं, लिस्टेड वैकेंसीज होती हैं, if you see, they mention that use of unfair means is punishable, use of unfair means will lead to cancellation of your candidature, etc. So that direction that those authority, for example, Rajasthan Public Service Commission or Rajasthan High Court for your Rajasthan judiciary exam, are passing is because this act is authorizing them to do so. This is the legal basis for that direction. All right. Now, with doing the long title, we got to know that this is an act aimed at preventing the leakage of question papers and use of unfair means at public examinations, and also to provide for matters connected therewith and incidental thereto. Okay. Now, enacted in the 43rd year of Republic of India. Moving on to the section 1 of the act. Before that, I would like to tell you this act has 8 sections plus 1 schedule. So your section 1 is your short title, your extent, your date of enactment. Your second section is your definitions. Your third, fourth, and fifth section provides what is forbidden under this act. Your section 6 provides the penalty for doing the forbidden acts. Section 7 provides the penalty for doing forbidden acts. In addition to which, if you are doing some acts like hurt, you are restraining somebody, etc., etc., then also what is the penalty if, apart from doing these forbidden acts, you are also causing hurt, you are causing wrongful restraint, etc., then what will be the penalty? Then your section 8 talks about the power to make rules. Okay. And the schedule speaks of what are the public examinations to which this particular act will apply. Okay. Schedule 1 is list of public examinations. All right. Now let's quickly move to the act. This is the basic structure of the act. Let's go to section 1. Section 1 provides that this act may be called as Rajasthan Public Examination
Prevention of Unfair Means Act 1992. Of course, this act is only passed in Rajasthan, so it will enact in the state of Rajasthan. Now, it shall come into force at once. कि जब भी आएगा पूरा का पूरा ये force में आ जाएगा. So basically, your date of governor's assent can be taken as your date of enactment of this. Sorry, governor's assent can be taken as your date of this act coming into the force. Moving on to the next section. Section number 2. Your section number 2 has the definitions. The first definition, section 2, clause A, is of examination center. Just give me a moment. Yes. Your first is the examination center. Your examination center is any place fixed for holding public examination and include the entire premises attached thereto. So basically, not just the classroom, not just the halls you are writing your exam in, but also the garden, the washrooms, the parking area attached to that particular exam center will be a part of examination center. Your second definition is on what is public examination. So for your public examination, you need to refer to the schedule. जो भी exam schedule में बोले गए हैं to be public examinations, they will be the public examination for the purpose of this act, and the act will extend only to those examinations because only they are deemed to be the public examinations. Now C, clause C talks of unfair means. Unfair means in relation to an exam means, it means unauthorized help from any other person or from any material written, recorded or printed in any form whatsoever, or the use of any unauthorized telephonic, wireless or electronic or other instrument or gadget. For example, आप अपने neighbor से help मांग रहे हो, that is unfair. आप कोई चिट बनाकर लेके जा रहे हो, you are using the chit to write the exam, that is unfair. आपने कोई recording रख रखी है, you have earphones connected in your ears, you have smart watches on you, etc., etc. All of these are deemed to be unfair means. That is why nowadays there is an instruction in your admit cards for public services, for public examinations, that you are not allowed to carry mobile phones, you're not allowed to carry watches, you're not allowed to carry electronic gadgets in your exam hall. Okay. Then D, of course, D says कि कोई भी expression, कोई भी word जो इस act में define नहीं है but use किया गया है, तो उसका same meaning होगा जो IPC में meaning होता है. यानी कि अब IPC has become the erstwhile IPC for us. So for now, after 1st July 2024, we can use BNS for this purpose. तो जो वर्ड्स पब्लिक एग्जामिनेशन में डिफाइंड नहीं है, हम उनके लिए अब बीएनएस को रेफर कर सकते हैं. एंड इन केस वो वर्ड्स बीएनएस में नहीं है, देन वी ऑफ कोर्स हैव आवर पेरेंट रिपील स्टैट्यूट व्हिच इज इंडियन पिनल कोड, व्हिच इज ऑफिशियली मेंशन्ड इन योर पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट ऑफ 1992. All right. So when I was telling you the scheme of this act, I was basically telling you that your section 3, 4 and 5, this speaks of what is forbidden under this act. So section 3 बोलता है that there is a prohibition of use of unfair means. कोई भी person unfair means public exam में use नहीं करेगा. और unfair means का मतलब है unauthorized help from any person, from any material, or any unauthorized telephonic, wireless or electronic or any gadget or any conversation which is happening through your electronic media or any gadget that you are using. So basically, if I am giving an exam and I use any of the unfair means, it is prohibited under the Rajasthan Public Examination Act of 1992. Moving on to section number 4, which is unauthorized possession or disclosure of question paper. अभी हमने बात की कि कोई भी जो है अनफेयर मीन्स का यूज एग्जाम में नहीं करेगा. अनफेयर मीन्स को कौन यूज कर रहा है? कैंडिडेट यूज कर रहा है. सो दिस सेक्शन इज बेसिकली
for the candidate who is appearing in an exam, क्योंकि यहाँ पर लिखा है in relation to an examination while answering question in a public examination. आंसर कौन करेगा? हम करेंगे, हम कैंडिडेट्स हैं. So your section 3 is for candidates, people who are appearing in the exam. Moving on to section number 4. सेक्शन नंबर 4 जो है वो अगली प्रोहिबिशन हमें बताता है. सेक्शन नंबर 4 सेज अनऑथराइज्ड पोजेशन और डिस्क्लोजर ऑफ क्वेश्चन पेपर. ओके, यानी कि दिस इज अप्लाइंग टू पीपल अदर देन द कैंडिडेट्स. अदर देन कैंडिडेट्स may include candidates also. ठीक है, कैंडिडेट्स भी और कैंडिडेट्स के अलावा भी. So no person who is not lawfully authorized or permitted by virtue of his duty to do so shall, before the time fixed for distribution of question paper to examinees at public examination, procure or attempt to procure or possess such question paper or any portion or copy thereof, or impart or offer to impart information which he knows or has a reason to believe to be related to or derived from or to have appearing upon such question paper. बेसिकली ये सेक्शन हमें कहता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि लॉफुली ऑथोराइज्ड नहीं है, जो कि लॉफुली ऑथोराइज नहीं है क्वेश्चन पेपर को समय से पहले डिस्ट्रीब्यूट करने पे अमंग द कैंडिडेट्स, वो ये दो काम नहीं करेगा. यानी कि फॉर एग्जांपल एग्जामिनर है, एग्जामिनर आपको टाइम पे क्वेश्चन पेपर दे देगा. ओके, नाउ आपका एग्जाम हुआ एबीसी पब्लिक स्कूल में, room number 21. Okay, now miss X is your teacher. She has to distribute you paper at 9 a.m. Now if Mr. Z, who is a gatekeeper in that school, he is not authorized to have your question paper, right? तो अगर ये मिस्टर Z जो कि गेट कीपर हैं, या फिर मिस्टर A जो कि इस पेपर में कैंडिडेट हैं, these people are not lawfully authorized to. Now what will happen in this case? अगर ये गेटकीपर या ये कोई कैंडिडेट जो है ये अटेम्प्ट करता है टू प्रोक्योर क्वेश्चन पेपर कोशिश करता है, या फिर कुछ उसका पार्ट कोई पेज प्राप्त करने की कोशिश करता है, देन दैट इज फॉरबिडन अंडर सेक्शन 4. सेकेंड बी पार्ट इसका ये कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो कि नॉलेज दे रहा है किसी को कि पेपर में ऐसा आएगा, पेपर में ये आएगा, आप ये पढ़ लो, जिससे ये लगे कि दिस पर्सन माइट नो व्हाट इज इन द एग्जाम, दैट पर्टिकुलर एक्ट इज आल्सो फॉरबिडन अंडर दिस कोड, अंडर दिस एक्ट. ओके, now moving on to next section. Section 5, which is also a prohibition. So here the essence I was talking about is section 3, unfair means उन्हीं पे लगेगा जो कि candidates हैं. section 4 में candidates भी आ जाते हैं, plus people other than candidates भी आ सकते हैं. अब ऐसा भी हो सकता है कि एक टीचर, जब हमने अभी बात की थी मिस एक्स, शी हैज टू गिव पेपर एट 9 AM, और अगर वही 7 बजे किसी को और को पेपर दे देती हैं कि हमारे पास पेपर आ गया है, देन शी विल आल्सो बी गवर्न्ड अंडर दिस सेक्शन. शी विल आल्सो बी सेड टू बी contravening section number 4. Now yes, section 5, leakage. Section 5 is related to your leakage. Yes, section 5 says that no person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, हम यहाँ तक पढ़ेंगे, shall directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him. अब I was in the committee of making question papers. मैंने question paper set किया. मुझे पता है कि इस question paper में set A में ये 5 particular questions हैं, A, B, C, D, E. These are the 5 questions in set A.
Now what I do, I go and I give it to my friend because I know he will be appearing in the exam. So that kind of leakage is prohibited under Section 5 of the राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट ऑफ 1992. इट सेज कि आप अगर उस एग्जाम प्रोसेस में कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो काम पेपर बनाने का है, पेपर अप्रूव करने का है, पेपर डिजाइन करने का है, पेपर को सप्लाई करने का है फ्रॉम टू द सेंटर्स, टू मेनी सेंटर्स, अगर आप कोई भी काम आपको इंटरेस्ट किया जा रहा है ड्यूरिंग दैट एग्जाम प्रोसेस, एग्जाम वर्क, आप कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपकी नॉलेज में है रिगार्डिंग दैट पेपर, यू विल नॉट लीक इट टू एनीबडी. नाउ द एक्सेप्शन इज कि जब आपको वो पेपर कैंडिडेट्स को देना होगा तो आप दोगे ही, एक्सेप्ट वेयर ही इज परमिटेड बाय वर्च्यू ऑफ हिज ड्यूटी टू डू सो. अगर आपको अपलोड करना है तो वो तो आप करोगे ही. सो बेसिकली वेयर यू आर लॉफुली अलाउड टू गिव दैट पेपर टू द पीपल who are candidates, then this section will not of course apply. Apart from that, if you are leaking the paper, then you are contravening section 5 of the Public Examination Act of Rajasthan. Moving on to section 6 and section 7, which are both the penalty sections of this statute. Yes. So your first section on penalty says that जो भी सेक्शन 3, 4 और 5 को कॉन्ट्रावीन करेगा, whoever contravenes section 3, 4 और 5, 3 में कैंडिडेट, 4 में कैन बी कैंडिडेट और अदर देन कैंडिडेट, एंड 5th में पीपल इंटरेस्टेड विद एग्जाम वर्क. यानी कि इसमें आपका पेपर बनाने से लेकर पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले तक पर्सन जो है, स्कूल्स हैं, एजेंसीज हैं, एनटीए है, सब इन्वॉल्व है. ओके, अंडर सेक्शन 5. ओके, सो 3rd is specifically for candidate, 4th is for candidate and also for other people, 5th is only for the people who are interested with the exam work. सो अगर कोई भी इन प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन करता है, यानी कि अनफेयर मीन्स यूज करता है, पेपर लीक करता है या पेपर प्राप्त करने की कोशिश करता है और किसी को इंफॉर्मेशन देता है, देन द पेनल्टी इज अ मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे लिखा है विच में एक्सटेंड टू. ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ 3 years और फाइन विच में एक्सटेंड टू 2000 और बोथ, दोनों भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है. ओके, नाउ सेक्शन 7 सेज कि ये जो आप एक्ट कर रहे हो, 3, 4, 5 सेक्शन का एक्ट कर रहे हो, जिसके लिए सेक्शन 6 पेनल्टी दे रहा है ऑलरेडी, अगर उसके साथ साथ आपने क्या किया, आपने किसी की डेथ कॉज कर दी या प्रिपेयर कर रहे हो डेथ कॉज करने का, हर्ट करने की किसी को कोशिश कर रहे हो, असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, रॉन्गफुली रिस्ट्रेन कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, एक कार जा रही थी एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन पेपर डिलीवर करने, आपने उसके ड्राइवर को पकड़ लिया, उसको रिस्ट्रेन कर दिया, उससे क्वेश्चन पेपर ले लिए, उसको हर्ट कॉज कर दिया, उस पर्सन को असॉल्ट कर दिया, एंड जो उसके साथ एक और पर्सन था, आपने उसकी डेथ कॉज कर दी ताकि आपके अगेंस्ट एविडेंस ना दिया जा सके. ओके, सो इफ यू प्रिपेयर फॉर, नाउ यहाँ पे वर्ड क्या यूज है, प्रिपेयर. अगर आपने इन एक्ट की प्रिपरेशन भी की है, then in that case also you will be convicted under this act, even for the preparation, not for attempt होगा तब तो आप पनिश किए ही जाओगे. बट अगर इस एक्ट के पर्पसेस के लिए 3, 4, 5 जो एक्ट दिए गए हैं सेक्शन 3, 4, 5 में, उस एक्ट को करने के लिए अगर आप इन सब एक्ट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम doing these act under section 3, 4 and 5, then you will also be punished for preparation of these acts. The preparation may be extended up to 3 years, may extend to 3 years, and shall also be liable to fine which may extend to 5,000 rupees. Now the difference between these two sections is, यहाँ पर 3 years, यहाँ पर क्या है, 3 years एंड और फाइन है, यानी कि फाइन अप टू 2,000 रुपीज.
दोनों में से एक भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। सेक्शन 7 में 3 years अप टू 3 years पनिशमेंट है प्लस फाइन है, यानी कि दोनों होगा, फाइन अप टू 5,000 रुपीज। ठीक है, दोनों होगा। नाउ पावर टू अमेंड स्केड्यूल, स्केड्यूल अमेंड करने का मतलब कि पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन की लिस्ट में आप और भी एग्जाम्स को ऐड कर सकते हो। तो वो पावर किसकी है? ऑफ कोर्स स्टेट गवर्नमेंट की है। जब स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट है तो स्टेट गवर्नमेंट की ही पावर होगी, एंड देयरफॉर your act here winds up. Now we will move on to the schedule, seeing what schedule says to be the public examination. Okay, so your first is कोई भी एग्जाम जो राजस्थान RBSC करा रहा है, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया। ओके, वो एग्जाम जो है वो पब्लिक सर्विसेज है। कोई भी एग्जाम जो इंडिया में एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी करा रही है, कोई भी एग्जाम जो RPSC करा रही है, यानी कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, APO, JLO, हमारे जो एग्जाम है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराती है, या फिर UPSC करा रही है। ये हमारे पब्लिक सर्विसेज एग्जामिनेशन में माने जाएंगे। सबसे पहले एक्ट ने इन तीनों को रिकॉग्नाइज किया। विद टाइम एक्ट ने और भी कुछ एग्जाम्स थे जिनको पब्लिक सर्विसेज ने ऐड किया। नाउ दीज एग्जाम्स आर कोई भी एग्जाम जो राजस्थान रेलवे बोर्ड करवा रहा है। ओके, कोई भी एग्जाम जो राजस्थान रेलवे बोर्ड करवा रहा है, दिस केम इन 1999, दिस अमेंडमेंट। कोई भी एग्जाम जो स्टेट का कोई भी कॉलेज करा रहा है, एनी ऑटोनमस कॉलेज इन द स्टेट, that will also be a public exam. This came in 1993. Any exam conducted by Rajasthan High Court, any exam conducted by Rajasthan Subordinated Ministerial Service Selection Board, which is our and any exam which is your RSMSSB. Okay, RSMSSB, yeah, which is your RSMSSB, Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board, and any other exam which All India कोई भी exam All India Trade Test का जो Directorate General of Training DGT करवा रहा है under the Skill Development and Entrepreneurship of Government of India. Okay, so ये कुछ amendments थे जो इस schedule में carry forward हुए। अब और ये कब कब आए, just let's have a look at them, and with this we will be winding up our course. Okay, so winding up our act on Rajasthan Public Examinations, use of prevention of use of unfair means Act of 1992. So in 1993, uh, your in 1993, yes, your autonomous colleges exam were recognized as public exam. एनी ऑटोनोमस कॉलेज, जो भी कॉलेज गवर्नमेंट का नहीं है, ऑटोनोमस है, उसका एग्जाम पब्लिक एग्जाम होगा। कोई भी एग्जाम जो राजस्थान रेलवे बोर्ड करवा रहा है वो होगा पब्लिक सर्विस एग्जाम। राजस्थान हाई कोर्ट करा रहा है वो होगा पब्लिक सर्विस एग्जाम। कोई भी एग्जाम जो राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्टेरियल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए हो रहा है, वो करवा रहा है, दैट इज ऑल्सो योर public service exam. And fifth is public examination, sorry, fifth is 2019 में कोई भी एग्जाम जो ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट की फॉर्म में DGT करा रहा है वो भी आपका पब्लिक एग्जामिनेशन होगा अंडर योर राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। सो विद दिस वी wind up our public examination, Rajasthan Public Examination Act of 1992. There is another act that was just enacted in 2022. We will talk about it in our next lecture, and we will also compare where the two acts what the two acts are providing for and what is the difference between them. Right? So I hope you like the video and this video is useful for you. Thank you very much for watching with me till here. Please like, subscribe, and share our channel. Thank you very much.